हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विभूस बायोलॉजी। टाइटल से तो पता चल गया होगा कि आज हम सेल डिवीजन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है ना, सेल अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, एक सेल से दो सेल होता है, दो सेल से चार सेल होता है, क्योंकि सेल डिवीजन हमारे लिए जरूरी है। हमारे सेल के लिए सेल डिवीजन जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सेल का नंबर बढ़ता है और उससे क्या होता है कि ग्रोथ होता है और प्रोलिफरेशन होता है। तो सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, बट सेल डिवीजन इज एक्चुअली not itself an individual part. It is actually a part of cell cycle. Okay, if we see cell division is a part of cell cycle, it is not actually an individual thing. That cell cycle is a very large thing. If we see that cell cycle actually a large thing, and in that large thing there is a small thing, that is cell division. Okay, so if we see first, what is cell division? It is the process by which a parent cell divides into two or more daughter cells. So it is a process, it is a biological process in which a parent cell divides itself into two or more daughter cells. There are two distinct type of cell division. If we see, then cell division दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक है माइटोसिस, एक है मेयोसिस। माइटोसिस क्या होता है? वो है इक्वेशनल डिवीजन, मींस द सेल those are involved in this division, they are actually vegetative cell or they are actually somatic cell, and they divide equally. But if we see meiosis, it actually occurs in the reproductive cells or in the sex cells where reductional division is seen. ठीक है, then a special type of division is also there, that is vegetative propagation. Actually, that is a type of vegetative reproduction, and that is also known as binary fission, which is seen in the case of prokaryotes and eukaryotes like amoeba, where binary fission, multiple fission is also seen. In this process, the genetic material simply segregate equally into two daughter cell. अगर हम binary fission के बारे में देखें तो एक सेल है, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली कोई भी प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व होगा, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सिंपली हाफ होकर दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। सो इफ वी सी, इन टुडेस क्लास वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट सेल साइकिल. Cell cycle is the bigger process. In cell cycle there is a process called mitosis. We will discuss mitosis in the later video. Okay, in today's class we will not actually discussing that. In today's session we are only discussing about the cell cycle, and this cell cycle, that is also according to the NCERT syllabus and higher secondary syllabus, because in higher classes those students, they also know about the cell cycle checkpoints, they know about the cell cycle regulations, but we are not discussing about them. So I'm planning for a cell cycle regulation and checkpoint videos, but that will be in future, but that's not happening today. In today's class we are only discussing about the cell cycle. तो अगर हम देखें तो सेल डिवीजन इज ए पार्ट ऑफ द लार्जर सेल साइकिल प्रोसेस. ओके, सेल साइकिल एक लार्जर प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर आता है क्या? सेल डिवीजन, इन व्हिच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन. अगर हम देखें तो सेल साइकिल में ही सेल खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए. सेल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज इंटरफेज, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरफेज. That interphase consists of three main phases. They are like G1, S, and G2, where this G1 and G2 are the growth phases and S is the synthetic phase. Simply ये नाम से पता चलता है कि G1 और G2 में कुछ ग्रोथ होगा और S में कुछ सिंथेटिक जैसा होगा, मीन्स सिंथेसिस होगा. ठीक है, there are also some checkpoints during interphase that allow the cell to either advance or halt for the development. So in cell cycle there are also some checkpoints. Those checkpoints are actually made for the cell either to proceed or to halt. अगर हम देखें
एक सेल डिवाइड कर रहा है लेकिन उसमें कुछ एरर है, तो वो क्या करेगा, वो खुद को रोकेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा, वो फर्दर डिवीजन के लिए नहीं जाएगा, वो खुद को रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना एरर को रेक्टिफाई करना है। इट हैज टू रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक्स। From those rectification, then it will produce. Then it will proceed. Okay. If that will not happen, then the cell will kill itself or damage itself because it is not ready for the division. If uncontrolled cell division will proceed, then that will proceed to cancer. अगर हम देखें ये सेल साइकिल क्यों जरूरी है, क्योंकि एक कंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन हो रहा है। अगर कंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो कैंसर कराएगा। ठीक है। फॉर ए टिपिकली रैपिडली प्रोलिफरेटिंग ह्यूमन सेल, अगर हम एक ह्यूमन सेल के बारे में सोचें तो एक ह्यूमन प्रोलिफरेटिंग सेल क्या है, जो डिवाइड करने के लिए जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, एक टोटल साइकिल टाइम होता है 24 आवर्स का, जिसमें G1 फेज होता है 11 आवर्स का, S फेज होता है 8 आवर का, G2 होता है 4 आवर का और M होता है 1 आवर का। अगर हम देखें तो वो जो फास्ट ग्रोथ फेज है वो 11 आवर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस फेज में ग्रो होना है, उसको एस फेज के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि वो G1 से एस को ट्रांजिट करेगा, तभी उसको एस फेज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आफ्टर दैट इन एस फेज it has to ready for the G2 phase, then it will take 8 hours. After that in G2 it will further take 4 hours. Why? Because it has to enter to the mitotic phase. That mitotic phase actually lasts for only 1 hour. So that is the shortest time. So before entering to that shortest time, they take actually this long gap or this long time for rectification only. They actually do some preparations in itself. वो खुद में कुछ प्रिपरेशन करते हैं और अपने आप को चेक करते हैं कि मैं उस काम के लिए तैयार हूं या नहीं। मेरे को माइटोसिस करना है, लेकिन माइटोसिस के लिए मैं तैयार हूं या नहीं, उसके लिए मुझे G1, S, G2 ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है। So you can see the time distribution in the cell cycle. The G1 takes 11 hours, S take 8 hours, G2 take 4 hours, and M take 1 hour. Then these are the processes. Before going to the M phase, we have to discuss about G1, S, and G2. What actually happens there? In G1, the specialized cellular functions occur for the DNA replication. What is DNA replication? DNA replication is a DNA duplication process. Means the DNA content of the cell has to be duplicated. If there is a 100% content of DNA, then it has to convert it into 200%. Then only it can divide into 100 equally to each. So for that, it has to be duplicated. And that duplication phase is occur in the S phase. So for that, it actually prepare itself for the DNA replication. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एस फेज में जो काम होगा उसके लिए उसको G1 में प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए पहले G1 में जाना पड़ेगा। वो G1 में खुद को प्रिपेयर करेगा। कैसे ना, वो पहले उसका सेल का साइज बड़ा होगा, द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर। देन ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन, organelles also duplication, their duplication actually needed. Why? Because a cell has endoplasmic reticulum, a cell has a mitochondria, chloroplast, and several organelles. They are also need to duplicated. Why? Because when one cell will produce two cells, its cell content will also divide and they will also segregate into those cells. For that, the organelles need to be duplicated. Then comes the S phase. It is in this phase an entire copy of DNA inside the nucleus duplicates. That is called DNA replication. In DNA replication, actually में DNA replication में क्या होता है ना, जो
पूरा का पूरा डीएनए कंटेंट है एक सेल का, वो डुप्लीकेट हो जाता है। ताकि क्या होगा ना, वो जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड करेगा, क्योंकि माइटोसिस को हमने पहले से ही बोल रखा है कि ये है इक्वेशनल डिवीजन, और इसमें क्या होता है ना, सेल को इक्वली डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अनदर पार्ट इज देयर, द सेंट्रोसोम आल्सो डुप्लीकेट एंड डिवाइड टू फॉर्म सेंट्रियोल व्हिच विल प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर। जैसा कि आप सब लोग माइटोसिस के बारे में आपको तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि माइटोसिस में क्या होता है ना, वो हम देखें कुछ फाइबर जैसा और कुछ रोप जैसा लगा होता है जो क्रोमोसोम को खींचता है अपने तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। उस स्पिंडल फाइबर को क्या करना पड़ता है ना, वो स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट करेगा और उसके बाद वो क्रोमोसोम को खींचेगा अपने ओर। जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे कि ये सब कैसे होता है, लेकिन उसके लिए वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो फॉर्मेशन कौन करेगा, इन एनिमल सेल दैट सेंट्रोसोम विल प्रोड्यूस दो स्पिंडल फाइबर। इन प्लांट सेल देयर आर नॉट नो सेंट्रोसोम, they have some different mechanism by which they produce their spindle fiber, but in animal cell they have centrosome, and those centrosome they also duplicate and they divide to form two centriole, okay, and those centriole will migrate to their respective pole, one from one to upper pole, another one to downward pole, and from there they will produce spindle fiber, which is actually necessary for the cell division process. Then comes the G2 phase. In the G2 phase, the cell grows more. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था G1 में कि सेल ज्यादा ग्रोथ करता है। इन G2 the cell also grows more. पहले से जितना ग्रो हुआ था उससे कई ज्यादा ग्रो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एंड मेक्स प्रोटीन एंड ऑर्गेनल, इसमें भी प्रोटीन और ऑर्गेनल्स का जो तैयारी है वो भी चलता रहता है, ठीक है। प्रोटीन भी बनाया जाता है, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन भी बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेल को कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सेल को यहाँ पर 100% प्रिपेयर होना चाहिए खुद को, कि जैसा कि वो खुद को फर्दर डिवीजन करे, ठीक है। एंड बिगिंस टू रिकॉग्नाइज इट्स कंटेंट इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। आगे उसको माइटोसिस भी करना है, तो माइटोसिस के लिए उसको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो सब वो करेगा इस G2 फेज में। उसके बाद आता है M फेज। M phase is the actual cell division process where true nucleus division is occurred. That nucleus division is known as karyokinesis, which is followed by cell division, that is cytokinesis. That is that we will discuss it in the separate video. But for today's class, I just want to elaborate you what is karyokinesis and what is cytokinesis. In a cell, the cell actually directly not develop or directly not divide. It undergoes a nucleus division first. Means a cell has a nucleus. As the process mitosis occurs inside eukaryotic cell, the eukaryotic cell has a nucleus. That nucleus first divided into two halves. Okay, and that process is known as karyokinesis. After that, cytokinesis occurs, in which the cell actually divides. Okay, I will discuss it in the later class. This is now for today's class. और मुझे लगता है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश की है कि सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल साइकिल में क्या होता है। तो थैंक यू, एंड आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं ऐसे ऐसे कंटेंट भी डालता रहूंगा। तो ये आपको लॉकडाउन के दौरान हेल्प करेगा, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन में ही अपलोड होगा। तो thank you very much.